So the street food, we always talk about street food. हर टाइम हम street food और we are missing that actually. अभी हम बहुत miss कर रहे हैं अपने street foods and all those चटपटा खाना what we used to eat from all the in the regular times at without this quarantine and without जब हम लोग regular life में थे. So now the thing is that everybody, all of us wants to eat nice food, and the food has been a life to us at the moment. And the way out of this quarantine, the way out is very simple, that we have to be really nothing else, and we should be just taking care of our near ones and dear ones. Staying home, staying safe is one of the things that we have to do. All the methods that we have to choose while cooking our meals, it should be zero waste. That what is the topic today. It's 100% no wastage that we have to do. It's 100% we have to reuse our produce all the time. हर चीज़ को अच्छी तरह यूज़ करना, उसे पकाना, उसे reuse करना is right now is the method and technique that what we have to be on. So the recipes which we're going to do today, a couple of recipes. That one is pav bhaji, which is a best street food that we can get, and it's all with the leftover foods that we have to do today. And then we will do a soal keema paratha tacos. So tacos is one of the street food of Mexico, right? So now we're gonna twist it to our own variants. Let's do those couple of recipes, and let's start with the thing as and then we can come to the quick questions and normal talks of the thing. Okay, so I'm gonna quickly show you what I got today is my leftover food which was in my fridge, which is malai methi, which is a mushroom masala, which is another aloo bangan and onion bhaja, and then we have the potato gravy, and then we have some keema over here, and then we did a egg kejriwal, which you can find it on my YouTube soon, and on my page of Instagram, which is Chef Sagar Bajaj. So this is the malai methi, malai hing matar malai. So let's collaborate all these. So these are all leftover foods. So that is the oil. I'll pour quickly in there. Some of the green chili. Let's add that. This is my garlic and ginger. All the cooked vegetable already have all those things, but let's get some extra to it and make our meal little more delicious. So I've just muddled it, nicely. So that is there. Let's cook it off nicely. So this is a very very quick recipe. जल्दी जल्दी चटपटा खाना और शाम का evening snack बनाने के लिए सबसे best, all mother cooked food which has been left over. So let's do that and enjoy in the evening. कल बना लीजिएगा, आज बनाइए, जब आपका मन करे उस टाइम यूज कर सकते हैं. So now my ginger, garlic and green chilies are cooked nicely. So I'm gonna put all this, but what I will do that that I don't have to work too much. So I just gonna muddle everything, then I'm gonna put it. So basically muddler. So I just gonna mash everything, that it सारा कुछ आराम से मिक्स करके, ना मिक्सी में पीसा ना कुछ, बट सिंगल पॉट में करके इसको बहुत बढ़िया तरीके से मडल कर लेते हैं. तो ये हमारा गया आलू बैंगन और कैरेट. अब इसके बाद हम डालते हैं अपनी आलू की सब्जी. ये देखिए आलू की सब्जी, इसको भी हम हल्का हल्का मडल कर लेते हैं. हमें अपनी ज़्यादा सब्जियों को ज़्यादा देर ना लगानी पड़े और टाइम ना लगाना पड़े, और किचन से बाहर निकलें और फैमिली के साथ एंजॉय करें. पूरा क्वारंटीन टाइम को एंजॉय करके चलें तो ज़्यादा बेटर है. And then we have some mushroom masala that we cooked in the afternoon. So that is again a leftover, And अब इसमें last में we will add few more things. So this is there. See how nicely it's going. I'm just gonna make a little noise in there.
That's my exhaust system gonna start. तो ये हमारी पाव भाजी की तैयारी हो रही है और इसको जितना चाहें उतना दबाते जाएं और ये बढ़िया से मैश होके एक बहुत बढ़िया सी ग्रेट स्ट्रीट फूड डिश बन के निकलेगी। अब मेरे पास ये थोड़े से टमाटो हैं, सो आई टेल यू वन मोर गुड सेविंग एंड जीरो वेस्ट। सो व्हाट आई डिड, यू मस्ट, सारे लोग सोच रहे होंगे टमाटर पीस के रखें क्या। सो इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए I have did one technique to them that I have boiled 5 kg 5 किलो टमाटर एक ही बार में उबाले ग्रीन चिली एंड गार्लिक एंड जिंजर के साथ और उनको पीस के रख लिए। सो देयर लाइफ बिकम्स ऑलमोस्ट 7 to 8 days जहाँ पे टमाटर सड़ने चालू हो जाते हैं। दीज आर लिटिल किचन हैक्स दैट वी कैन यूज लेटर ऑन इन आवर रेगुलर लाइफ। ठीक है, सो नाउ लेट्स ऐड दीज टमाटोज, दे आर कुक्ड ऑलरेडी सो वी वोंट बी वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। लेट्स ऐड सम ऑफ द पाव भाजी मसाला। You can add any of the पाव भाजी मसाला, whatever brand you like, MDH है, मार्केट में कई सारे ब्रांड्स हैं और इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे। और इसके अंदर हल्की सी डालेंगे हम देगी मिर्च और इसमें ऐड करते हैं पानी थोड़ा और वापस अपना फेवरेट टूल लेंगे। सी पाव भाजी इज रेडी, ऑलमोस्ट 1-2 मिनट हीट अप पे रखेंगे इसे। अब कुछ ना कुछ फैट तो चाहिए, मक्खन, बटर, क्रीम, ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो डालनी ही पड़ेगी ना। जब पाव भाजी बना रहे हैं बिना मक्खन के पाव भाजी तो कभी देखी नहीं ना सुनी किसी ने। सो लेट्स ऐड पहले मटर मेथी मलाई। सो मटर भूल गए थे हम, सो नाउ मेरे पास मटर मेथी मलाई था। अब इसमें थोड़ा सा आयरन भी अच्छी तरह आ गया क्योंकि हमने मलाई मेथी भी डाली। सो दैट इज वन ऑफ माई, सी हाउ नाइसली इट्स मिक्सड एंड नाउ इट हैज ऑल द वेजिटेबल्स। नाउ इफ यू वांट टू मेक इट रियली रियली स्मूथ, अगर बिल्कुल इसको स्मूथ बनाना है तो फूड प्रोसेसर में डाल के पीस भी सकते हैं और नहीं तो इसको थोड़ी देर कुक कीजिए आराम से बिल्कुल, क्योंकि इसमें नमक, काली मिर्च सब कुछ है। सो अपना टेस्ट अनुसार आपको उस चीज को चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाजी में आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज देयर, सो आई वांट टू टेस्ट इट व्हेन इट्स डन। सो नाइसली डन, दिस इज माय भाजी। यू कैन अवॉइड ग्रीन्स and it can be a sai bhaji even. So there is a Sindhi dish which is a green in color which is called sai bhaji. So अगर इसमें सब कुछ green डाल देंगे तो वो साई भाजी बन जाएगी। तो nicely cook it off, एक बार बस अच्छी तरह बॉईल करेंगे और हमारा, और इतनी देर में हम अपना पीछे तवा ऑन कर देंगे जिस पे हमने अपना। नाउ लेट्स ऐड सम ऑफ कोरिएंडर, बढ़िया से कोरिएंडर डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे बटर। सो नाउ आई लाइक माई पाव्स दिस वे एंड आई जस्ट पुट बटर ऑन देम नाइसली एंड देन आई पुट बटर ऑन द साइड्स, all sides nicely, put them over there on my tawa. So nicely cook them off, all sides covered, so we can heat it up nicely, very easily and nicely we can do that. और ये गया। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, see how nicely my pav bhaji is done. You can add more masalas but all the masalas are already in my sabzi, so I'm not doing much of masalas. Here we go, this is done. You can take a nice spoon and you can go this to smash it nicely, that. So my pavs are cooking nicely. Now let's turn them off. ये हमारी भाजी रेडी हो गई। ये हमारा आ गया धनिया, ये हमारे आ गए प्याज और
ये हमारा आ गया नींबू और ये आ गए हमारे पाव नाइसली गोल्डन एंड ये आ गए हमारे पाव। तो ये हमारी पाव भाजी रेडी। So we will start with another amazing recipe, which is a keema. Basically, I cooked some keema matar. So now next recipe would be a swirl keema paratha tacos. So आज सुबह breakfast में पालक के पराठे, right? So now पालक paratha and keema, you must be confused कि how it's going to be, a dish. Now that can be a easy dish which we can use and all the ingredients are completely left over. So this is my keema, this is my some onions, there are some onions, coriander थोड़ा सा, और ये मेरा हींग मटर मलाई which I did for my egg केजरीवाल जो मेरी इंस्टा चैनल पे अपलोडेड हुआ है। और ये मेरे पालक के पराठे का आटा और ये मेरा रेगुलर पराठा, राइट। सो नाउ लेट मी शो यू हाउ आई डू माई swirl parathas एंड आई क्विकली गोना गो दिस। सो एक पोर्शन हमने पालक पराठे का ले लिया और दूसरा पोर्शन हमने नॉर्मल पराठे का ले लिया और इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, राइट। सो दिस व्हाट इज एग्जैक्टली अ मैक्सिकन dish can be worked as, because it's very simple and lot of people from Mexico tries to eat tacos. So taco is a street food dish. So you need basically a pan, a tawa, that's all basically we would be looking at. And now as I showed you the thing, so this is my swirl, right? This is my swirl, right? So let's do a nice roti out of it. So tacos की ना एक बड़ी प्यारी बात है जो मैंने अपने शेफ्स से सीखी थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था। So tacos is one dish which is picked once and it can't be put it down. So see how nicely it's the swirl has came out, which we can use it as a swirl paratha, or you can do a lachha paratha out of it even, and all those simple ways that we have to do. This is our keema. This is our keema. So I will quickly show you how to get the keema sorted. And let me just put some hot water in my pan. So I'm heating it up nicely. So I have added little water to my keema. Keema always, is the nicest dish on this earth. So let it heat it up nicely. ये सोया कीमा है, वेजिटेरियन है. You can make a non-veg keema out of it. इसमें मटर ऐड कर सकते हो, इसमें अपनी पसंद का फैट ऐड कर सकते हो, बटर घी जो भी चाहते हो. But we have made it very very simple, right? And now this is my swirl paratha. So let it get on the thing and इसको अच्छी तरह कुक करेंगे. Tortillas, lot of people would have heard tortillas. I will show you what tortilla looks like and what they get it in the market. These are tortillas. They call tortilla wrap and they sell it at very expensive prices. They look like a roti basically. It's made out of corn and easy things. So now this is my tortilla. It is an Indian tortilla basically, you can say, and it's easy to make and it's easy to use. So now this thing, what we've been saying as my egg Kejriwal recipe, which is available on my Insta channel. If you go in the highlights, you will be able to find it. It's called egg Kejriwal. It's not to do with Mr. Kejriwal, but it is one of the person, Devi Prasad Kejriwal from Bombay. He loves to have this recipe. So I have inspired from that particular recipe and got this thing done. So this is basically my leftover, and I have made this chili, green chili, matar, hing, malai paste. So I'm gonna use it on my tortilla. See how nicely the color is coming, how the proper fulka is going up.
This is my Indian tortilla, you can say. Oh, nice. This is the first time I got my fulka right. So this is my guacamole, but Indian variant of guacamole, which I'm gonna use. So matar hing malai, which is a leftover. Recipes are available. You can search it on my YouTube and channel. Okay. So now this is some onions I've got. कीमा हमेशा onions के साथ बहुत अच्छा लगता है. So let's put this nice, you know. This is my lemon. This is more onions and some coriander over the top and some salt for my thing and some cracked pepper. This is my fulka tacos, which are soil paratha tacos with keema. So that is another dish. You can do it with your leftover food. Now keema can be done with your vegetables as well. आप सारी वेजिटेबल्स का कीमा कर लीजिए. गोभी का कीमा बहुत बढ़िया बनता है, उसको यूज कीजिए. मसाले अलग अलग हैं. हम इंडियंस के पास मसाले इतनी वैरायटी है कि जो कभी एंड ही नहीं हो सकती. So we can play around with lot many good things with our leftover food. So zero waste, which is called what? Zero waste. And lovely dishes can be cooked out of your leftover meals. Summers में food gets rotten very quickly. कुछ भी बाहर पड़ा हो खराब होना चालू हो जाता है. That's what I was telling you that you know आप टमाटर को लेके अपना जो ग्रेवी है वो प्री कुक करके रख सकते हो. नाइस टेम्परेचर पे अगर वो कुक हुई है, it won't go off for around 6-7 days. So your shell life is increased. So you can use those techniques, you know, ginger garlic. You can make a ginger garlic, chop the ginger garlic and pour it into nice oil. So ginger garlic paste आपका ready हो गया जो बाजार से खरीदते हैं हम लोग. So अपने products fresh जब हम procure कर सकते हैं तो why not to preserve them in house as well. You know, same with your onions can be cooked nicely and make a paste out of it or make a tadka out of it. You can keep it nicely. And rice, even, you know, put a little lemon in it and it can be extra mile for your preservation. So हल्का सा लेमन, एक तो उसको चिपकने नहीं देगा जब आप कुक कर रहे हो अपने बॉइल्ड राइस, तो एक एक दाना चावल का बनेगा, और प्लस हर चीज़ को बढ़िया तरीके से प्रिजर्व करती हैं एसिडिक चीज़ें. So there's a question, chef, what is your favorite street food? Ragda patty is my favorite street food, and ragda patty is, let's quickly talk about that actually. And ragda patty is Bombay's best street food you can find, and I've uploaded a recipe on my YouTube. You can check it as well. It's basically मटरा कुलचा जो हम दिल्ली में खाते हैं, वहाँ पे रगड़ा पैटी होती है, आलू से पैटी बनती है. Right. Aanchal Kundra, can we use any other sauce or mayonnaise instead of Kejriwal dip? Yes, dear, you can use any dip you like. You know, आपके पास अगर घर में बटर चिकन की ग्रेवी बनी हो, आप वो ग्रेवी भी लगा सकते हैं. और आपके पास चिकन करी बनी हो तो थिक करके चिकन करी भी लगाई जा सकती है. So that was my leftover recipes, and I hope you guys liked it, and let's catch up really soon whenever we are doing it next. And thanks for watching, guys. What can we make with leftover boiled rice? You can do chehel. You can do lot of good things with your boiled rice. You can make a fried rice. You can make a rice and rajma patty. If you have rajma and rice left over, you can make a rajma and rice patty and do it in a nice bun. It would be a really interesting burger that you can have in your meal. And with the rice, you can basically do, if they are non-salted, non-savory, you can do a nice quick rice and milk pudding. And a lot of things you can do, you know. Just mix and match your ingredients and you will find a way through your own fridge to your gas stove, and you will cook a nicest meal to satisfy your soul. Trust me on this. So thank you, guys. Thank you for watching it. I really liked to share. I have loved to share my recipes, and you can follow me on Insta as Chef Sagar Bajaj, and
You can same follow me on my Facebook and stay tuned for more recipes on my YouTube channel. Thank you guys. Thank you.